everybody, welcome back to Crick Tracker's special show In the Air. मेरा नाम है निवेदना प्रभु. We are of course gathered here to be discussing everything to do with the T20I series. Now, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? What will the ideal playing 11 combination for both the teams be looking like? What are the weaknesses of both the teams' strengths as well? मुझे सब बताइए in the comment section. And to be asking one of my guests what she thinks about the same thing that I've asked all of you, let me bring on Gauri once again joining me in the studios. Always a pleasure having her with us here. Gauri, welcome back. T20I series agar dekha jaye, do you think it's going to be as smooth sailing as the ODI series that we're in? I mean, I think same effort should be there because ODI series को whitewash करके आ रहे हैं. तो I think going forward in the T20I series आपका same effort रहना चाहिए. You should not be taking it very lightly because West Indies ऐसे हमारे opponents हैं जो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप अगर उनके साथ ODI series जीत गए तो you should know you going in the T20I series you will be taking as lightly. You should be the best on the given day. But I think home support हमेशा रहता है. But given the match is going to be held behind the closed doors in Eden Gardens, so we believe that कि home soil है तो definitely उसका support तो होगा ही. तो उस पे अपनी strengths को I think back करना चाहेंगे. तो I think T20I series और जैसा कि सब बोलते आ रहे हैं कि रोहित शर्मा के अंदर कैप्टनसी का जो स्टिंट एक बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ है. ODI सीरीज में एक व्हाइट वॉश हमने अचीव किया है. तो आई थिंक उसको आगे बरकरार रखते हुए टेकिंग द क्यू फ्रॉम द न्यूजीलैंड सीरीज एज वेल जो हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जीतते हुए आए थे. तो आई थिंक इट्स गोना बी बहुत अच्छा एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा. बट बोथ द टीम्स शुडंट बी टेकिंग इट लाइटली. Okay, both the teams shouldn't be taking it lightly, and there's a very famous saying about the kind of play that really happens in Hindi, and Gauri can correct me if I'm wrong. What is that thing about chale to din tak nahi to sham tak? What is that muhavra that is actually there? डेफिनेटली आई थिंक जब जैसे आप ये तो बात की केवल कंडीशंस की हो सकती है कि अगर आप चल गए तो फिर आपका ही दिन है और अगर आप नहीं चले तो फिर उस केस में यू कैन नॉट से एनीथिंग. अब जैसे आप बात करते हो हमेशा आप पूछते हो कि जो क्वेश्चंस आते हैं कैन दैट पर्सन बी परफेक्ट एट दैट दिस पर्टिकुलर प्लेस. क्या वो फोर्थ पे अच्छा खेल सकते हैं, क्या वो फिफ्थ पे अच्छा खेल सकते हैं. तो इट इज द सेम थिंग कि अगर वो उस पर्टिकुलर दिन चल गए और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो यू हैव एवरीथिंग टू जस्टिफाई दैट मूव. बट वो नहीं आपके ऊपर ही बैकफायर हो गया तो इट्स एवरीथिंग रॉन्ग फॉर यू. So I think this is the basic thing. Yeah. This is the basic thing क्योंकि वेस्ट इंडीज अगर चले T20 फॉर्मेट में तो हमें पता है क्या होगा. बारिश होगा. Yeah. Of course, that goes in the stadium. लेकिन मोहन जी, you have also joined us. मुझे बताइए comment section में आपके हिसाब से क्या होगा आज. उसी के साथ let's take a quick look at the head to head between both these teams and of course even the stats of Team India in this particular stadium जो कोलकाता में खेल रहे हैं. अगर head to head देखा जाए, India has a little bit of an upper hand, having won on 10 occasions, and West Indies have won on 6. अगर हम stadium की stats भी देख सकते हैं, where India I think have in the last 5 T20Is, जहाँ पे they have won on 3 occasions, lost on 1, and no result in 1. Now, quickly coming back to the toss update that we have over here, we'll get right into that because that is the latest update. India have won the toss and chosen to bowl first. So, Gauri, I'll come to you, on that. Of course, more than whether it's a right decision or not. How do you view this in going into a stadium like Kolkata? आई थिंक अगर बोल फर्स्ट करने की ली है तो आई मीन डेफिनेटली कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लान इसके पीछे होगा. बहुत रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे कम टारगेट्स के बीच में. आई थिंक क्योंकि T20 जब आप खेलते हो पावर प्ले का गेम एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक आप प्लान करते हो कि पावर प्ले में आप ज्यादा स्कोर कर लो तो बाद में आपको उतना जस्ट लाइक व्हेन यू गो इनटू द थिंग्स लाइक T20 लीग्स एंड ऑल दैट. तो T20 का गेम काफी हद तक उस तरीके का रहता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि रोहित शर्मा के स्टेंट में जो एक टॉस जीतने का भी जो एक लक साथ में आया ना, दैट्स फेवरिंग इंडिया क्वाइट अ लॉट. आई मीन जो एक विराट कोहली के स्टेंट में ये वो टॉस हारते हारते जो इंडियन फैंस एकदम एक दे हैव रीच दैट थ्रेशहोल्ड कि उसके बाद वो कुछ कहना नहीं चाहते थे. आई मीन रोहित शर्मा के स्टेंट में एटलीस्ट दे आर गोइंग टू सी द विन द टॉस. तो आई थिंक एक वो काफी पॉजिटिव स्टार्ट लगती है. नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, यू एटलीस्ट गेट द पॉजिटिव अप्रोच टू द गेम. Yeah, I think Rohit Sharma fans are all noting it down. All the things that Virat Kohli did not cover of होने वाला है. We're talking about other battles that we look forward to, our player battles. So quickly, let's get into what the player battles are looking like. Kohli versus Cottrell will be, of course, interesting to see. यहाँ पे 2 dismissals. And I think another exciting one would be between Pollard. If you could take a look at the other player battle as well that we have. And then Gauri से पूछते हैं, it's Pollard versus Bhuvaneswar Kumar, जहाँ पे 1 dismissal है so far. But that Kohli versus Cottrell one is quite an interesting one. We also know Sheldon does have his signature, salute as well. Salute, yeah. What are we looking here at both these player battles, or is there something
some other player battle that you're looking forward to, Gauri? आई थिंक विराट और कॉटरल का जो बैटल है दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी शुड नॉट पर्टिकुलरली दैट दिस टाइम टॉक अबाउट हिज सेंचुरी एंड ऑल दैट स्टफ बिकॉज गिवन ये T20I गेम है आप 50-60 भी पिच करोगे दैट्स गोना बी ह्यूज दैट्स गोना बी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अगर आप 50-60 से भी पिच करते हो एंड कोहली फैंस आर इवन इलेटेड व्हेन यू ही गेट्स इवन हाफ सेंचुरी और समथिंग लाइक दैट तो आई थिंक ये काफी अच्छा बैटल देखने को मिलेगा दूसरा पोलार्ड और भुवनेश्वर का बैटल इसलिए इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि भुवनेश्वर हैज नॉट बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म एंड लाइन एंड लेंथ इन लास्ट ईयर्स और अगर लेकिन हमेशा एक व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भुवनेश्वर हमारे बहुत ही की पेसर रहे हैं इंडिया के लिए तो आई थिंक अगर वो आज परफॉर्म करते तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप को रिटर्न करने का एक्शन में तो आई थिंक दैट शुड बी अ वेरी वाइटल आई थिंक बैटल फॉर लुकिंग आउट ओके, तो बैटल्स के बारे में बात करते हैं। ऑन वन हैंड आप सबको क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ conversation that we just had about Kohli versus Cottrell? Tell me that. I think on the other hand, there's also a player battle between Rohit versus Cottrell. So Cottrell seems to be the common factor over here. या Dismissals are zero, so it'll be interesting to see if he's actually going to get the Indian skipper. However, राइट I want all of you to comment and tell me. अभी हम playing 11 जो अभी आ गया है, we're going to take a look. और मुझे बताइए कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको लगता है is going to be creating some trouble for both the sides. One from India, one from West Indies. मुझे बताइए काफी interesting choice of bowlers, Gauri. Let me come to you for the India side. Ravi Bishnoi as well has got that opportunity, will be capitalizing on it. We see Venkatesh Iyer. Of course, we know Surya Kumar has been consistent as well. But let's talk about the bowling line of India so far. क्या लगता है आपको? 10 में से कितना मार्क्स दोगे? आई थिंक मुझे जो ये बॉलिंग सेटअप है वो देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है इफ आई वुड हैव गॉट अ चांस मैं इसको बिल्कुल डेफिनेटली आई विल पॉइंट इट एट एज 9 बिकॉज ये जो दीपक चहर भुवनेश्वर कुमार हर्षल पटेल बिकॉज ये एक स्पेशलिस्ट T20 बॉलर्स हैं सारे के सारे क्योंकि दीपक चहर न्यू बॉल से अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं हर्षल पटेल ने क्या परफॉर्म किया इंडिया के लिए आई मीन T20I सीरीज में और ये जो आई मीन IPL है इसमें किस तरह का परफॉर्मेंस वो देखते आ रहे हैं उनको पर्पल कैप है उनके पास युजवेंद्र चहल भी एक एक स्पेशलिस्ट है रवि बिश्नोई ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया तभी उनको एक कैप मिल रहा है तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिकॉज सारे बॉलर्स इनफैक्ट उस तरीके से रखे गए हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हैं तो आई थिंक दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग अफेयर और काफी अच्छा मौका है उनके लिए परफॉर्म करने का होम सीरीज में परफॉर्म करेंगे तो आई थिंक आगे जाके उनको चांसेस काफी अच्छी मिल सकती हैं Correct. And we are of course coming back from the mega auction. So इतने जो सारे नाम थे in that West Indies playing 11, if you could take a look, वहाँ पे Romario Shepherd है, Odion Smith है. We have of course I think all fans in the Indian T20 league aspect have already started noting down कि वो उनके टीम की तरफ से खेल रहे हैं या नहीं. But talking about the West राइट Indies aspect, who could prove dangerous? If you could take a look once again of the playing 11, please. So Gauri can also give us. Yeah. या आई थिंक एक निकोलस पूरन में आई फील आई डोंट नो ये एक ऐसा हमेशा नाम लगता है कि जो हमेशा एक एक बहुत अच्छे से मैच बदल सकता है ही इज अ मैच विनिंग प्लेयर एक वो कर सकते हैं कायरन पोलार्ड ऑब्वियसली कैप्टन है और मुंबई इंडियंस के इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं तो आई थिंक ही इज वन ऑफ देम और आई थिंक नीचे जितने भी लोग को आप जान रोमेरो शेफर्ड अकील हुसैन ओडियन स्मिथ इन सबको IPL में अच्छी डील इंडियन 20 लीग में अच्छी डील्स मिली हैं तो आई थिंक उन सबका बैटल इंटरेस्टिंग होगा देखने में बट इफ दैट वन नेम आई डोंट नो व्हाई आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज ईशान किशन आई think he would be on cloud 9 because getting that handsome deal I mean getting that handsome deal and that too from his former franchisee Mumbai Indians से इतना ज्यादा उन्होंने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया होगा टू बी ऑनेस्ट कि उनको इस प्राइस पे वो लेके जाएंगे और आई मीन मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं वो तो आई थिंक वो उनके ऊपर एक खुशी तो है ही ऑब्वियसली ही इज हैविंग हिज हैप्पीनेस पार्ट बट देयर आल्सो कम्स अ प्रेशर व्हेन यू गेट such a high price tag and all because you somewhere has to justify those things Right. so I Okay. think एक वो भी एक उनके ऊपर होने वाला है Okay, so that word is of course about what we here at Trick Tracker think, but aap sabko kya lagta hai? Tell me in the comment section. I'll quickly take a question that's come in, and this is probably a conversation that also happened previously as to why he was not getting opportunities. So if you want to answer that, Ajay asking, क्यों हम ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं देखते हैं in these competitions? That's a little tricky one. That's a little opinionated also. Because आप ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाना चाहते हो, definitely there is no denying that he is not a very special talent, given that how he has performed in past. But अगर आप ये जब आप किसी प्लेयर की बात करते हो कि इनको क्यों नहीं खिलाया, तो आपके साथ एक ये भी justification होना चाहिए कि आप किसको हटाओगे.
इफ यू आर आस्किंग टू रिमूव ईशन किशन और सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ऐसा आप कोई प्लेयर का नाम नहीं ले सकते हो जिसको आप कह सकते हो हाँ वील रिमूव दिस पर्टिकुलर प्लेयर एंड देन वील ब्रिंग ऋतुराज गायकवाड़. Definitely giving chance is one thing, but given the bench strength you have, it is a very difficult decision to make out. I mean, आप रोहित शर्मा कैप्टन है, ईशन किशन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलरेडी वो कर चुके हैं डेब्यू, तो आप सूर्य कुमार यादव ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर हैं, और अब ऐसा तो है नहीं कि आप T20 सीरीज का पहला ओपनर खेल रहे हो. गिवन दैट आप सीरीज जीत चुके होते या आपके पास ऑलरेडी लीड होती, तो मे बी दैट ट्राइंग एंड टेस्टिंग थिंग कुड हैव वर्कड फॉर इंडिया. But I think going just into the T20I series, they would not like to just disturb those patterns and the combinations that they already have, I believe. Okay. So we Yeah. hope that answers your question. दूसरी तरफ, Gauri, I always like to get her viewpoint कि milestones में which is the most doable one. So let's find out from her कि जो approaching milestones है यहाँ पे क्या हो सकता है. Of course, Shreyas Iyer, if I'm not mistaken, will not be playing today, so we can just omit that one. Do we have anything else in milestones? If you could show us. Okay. So I'll come to you, Gauri, which is the most doable one यहाँ पे. I think the 3 6s का Aaron Pollard is very easy for him. अगर उनका डे है तो वो 3 6s कभी भी कर लेंगे. विराट कोहली having 73 runs, it's very difficult for me to say anything because we have been waiting for century from years and it is not just coming. So it's better I just do not say anything about Virat Kohli. It's that 73 runs are required for his milestone, but even if he gets 50, the Indian fans are happy. I am at least honestly telling that Indian fans are happy. Okay, Indian Even if he's fans getting are 50. happy. Talking about happy, it is somebody's happy birthday, and how better to wish him a happy birthday than the fact that we have social tracker. Whenever you think of social tracker, if everybody's got the clue, it's Wasim Jaffer's birthday today. So let's get going and find out कि social tracker पे क्या हो रहा है. Won't be surprised if I have the birthday boys tweet also there. Virat Kohli having tweeted T20s. Team India, he looks, of course, completely ready to go. King Kohli needs only 73 runs to cross Guptill, and he's the most runs in T20, which we've just discussed. And I'm getting a feeling that he's going to bring old carnage in the T20Is. Well, all of us are waiting Social and watching. social tracker is not completed until somebody hopes like that. He's hoping that Yeah. Kohli is getting century or something like. Dictionary, the next time someone wants to look at the word 100 should be synonym with Kohli. I mean, that's Right. the amount of times that we always used it in one sentence. Okay, this is interesting. Most 50s in a T20I career. Rohit Sharma right at the top with 30, Kohli 29, Babar Azam 26, Warner and Kapil. Okay, that's some solid numbers. First T20 match for India in 2022. The mission towards T20 World Cup begins today. King Aaj 50 Right. maar dena. I said I already told you Indian fans would be happy in 50 only. So that Right. really sums up. I mean, it's better than 5-0, guys. So we'll, Right. just keep talking about that before we wrap up. Quite an interesting way to see that. This will also kind of get into that momentum of the T20 World Cup 2022. True. Was not a great campaign. Again, we have a different skipper now at the helm of Fest. Do you think this is going to be like setting the pace for the rest of the year? डेफिनेटली आई थिंक जितने भी T20I गेम्स आने वाले हैं अब इंडिया के लिए, होम सीरीज हो या बाहर, वो हर एक गेम मैटर करता है गोइंग इन द रोड मैप ऑफ T20 वर्ल्ड कप दैट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. बिकॉज आपने बोला था कि जब आप खेलने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, आपको डिफरेंट कंडीशंस पे प्ले करना आना चाहिए. आपके जो कॉम्बिनेशन है उनमें भी आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. बिकॉज जब आप T20 वर्ल्ड कप की बात करते हो तो आपको कुछ यंग टैलेंट्स को भी चांस देना पड़ेगा. तो जैसे आप रवि बिश्नोई को खिला रहे हो, आप हर्षल पटेल को खिला रहे हो, आप नीचे डाउन द ऑर्डर काफी आप बॉलर्स को चांसेस दे रहे हो, ऊपर ईशन किशन है. अगर ये हमारे पास एक अच्छी सेट बैटर्स होगा तो आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता हमारे पास वर्ल्ड कप में. बिकॉज यू हैव दो सेट प्लेयर्स एंड एक्सपीरियंस नॉट इवन इफ द चांस कम द बैकअप इज ऑलवेज रेडी. So yeah, that's going to be yeah. Okay, so this is of course going to be laying the foundation. I see a lot of mixed reactions. Vijayendra is saying India jeetega. Abdullah is saying that West Indies will win. Dinesh is saying India jeetega. Great to see that all of you have picked your teams. Of course, I don't even want to ask Gauri because I know she's hoping that India will win. But West Indies puts up a good fight because we don't want a one-sided match. On that note, of course, I want to thank all of you for being so interactive and giving us your opinion. We will see, of course. You will see both of us once again very soon on Cricket Tracker to be discussing the result of this match. So na bhuliega to join us once again when we see you.